Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman says no late fees for nil GST return filing between July 2017 and January 2020. Equity benchmarks gained 0.7% led by rebound in European markets. Sensex closes 33,781. Nifty rises to 9,973. And oil prices extend losses amid fear of a second wave of COVID-19 outbreak. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यूरोपीय बाजारों में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार 0.7% की तेजी में रहे। सेंसेक्स 33,781 और निफ्टी 9,973 पर हुए बंद। और कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से जुड़े डरों के बीच कच्चे तेल के मूल्यों में अतिरिक्त गिरावट हुई दर्ज। पहले आज की बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। श्रीमती सीतारमन ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को आज नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय किए गए। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर 18% से घटाकर 9% कर दी गई है। छोटे करदाताओं को 6 जुलाई 2020 तक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 9% की दर से ब्याज देना होगा और ये 30 सितंबर 2020 तक मान्य होगा। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों का जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे मई, जून, जुलाई 2020 में प्रभावित आपूर्ति के लिए जीएसटीआर 3B फॉर्म सितंबर 2020 तक भरते हैं। वे करदाता जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो चुका है, उन्हें 30 सितंबर 2020 तक पंजीकरण बहाल करने के अवसर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि जीएसटी परिषद उर्वरक, कपड़ा और जूता चप्पल पर लगे कर में सुधार पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार होगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक पर चर्चा होगी। पुनीत, आज जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें जो ये फैसला लिया गया है कि लेट फी जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच जिन्होंने जीएसटी नहीं दिया है उनके लिए लेट फी नहीं लगेगी, ये आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है और कितना इसको इस फैसले से रिलीफ मिलेगा छोटे कारोबारियों को? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो छोटे कारोबारी हैं और जिन्होंने जीएसटी रिटर्न्स अभी तक नहीं भरी थी, उनके लिए एक बहुत ही चिंता का विषय था कि कैसे, क्योंकि जब व्यापार बंद है, ऑफिसेज बंद हैं, उस दौरान वो डेटा कलेक्ट करना और डेटा को
फाइल करना उनके लिए एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है कुछ हद तक रिलीफ है, इससे उनको एक सपोर्ट मिलेगी। और साथ ही और भी जो कदम उठाए गए हैं जीएसटी रिटर्न्स को लेकर के, वो जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं जीएसटी रिटर्न भरने में, उनको लेकर डेफिनेटली सहायता मिलेगी छोटे व्यापारियों को, और मुझे लगता है इसका काफी फायदा होगा। जो मेन इसके अंदर पॉइंट आज की मीटिंग में रहा है कि जो बेसिकली जो कॉम्पनसेशन, जो स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन देना है, यानी जो राज्य हैं कि जीएसटी कलेक्शन काफी गिरी है इस दौरान। हालांकि जो लेटेस्ट मंथ की कलेक्शन डेटा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये कहकर कि जो हमें वो पूरी तरह से मुहैया होगा हम तभी प्रोवाइड करेंगे, पर मुझे लगता है कि अनुमान ऐसा है कि जीएसटी कलेक्शन काफी गिरी होंगी अप्रैल और मई के महीने में। तो चलते स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना है, जो गवर्नमेंट से जो पैसा जाना होता है जीएसटी का, तो भारी गिरावट है। तो वो एक कॉम्पनसेशन कैसे किया जाए, क्या उसके लिए जीएसटी काउंसिल बाजार से पैसे उधार लेगी और पैसा उधार लेकर के स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेगी, वो सारे बड़े फैसले हैं जो मुझे लगता है जो अगली जो जीएसटी मीटिंग होगी उसमें लिए जाएंगे। पर ये अनयूजुअल जो सिचुएशन है जिसमें बिक्री काफी कम हो गई इन महीनों में, लॉकडाउन के महीनों में, ऐसे में जो क्षति है राज्यों की वो भी काफी बड़े पैमाने पर होगी। सो ये एक बहुत बड़ा भार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और ये बहुत बड़ा भार है। देखिए, जब जीएसटी जब एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये एक तरह से गारंटी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट्स के रेवेन्यूज को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, और उसके अंदर 14% पर एनम का जो इजाफा होगा वो भी वो गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और यदि वो शॉर्टफॉल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बाध्य है। तो अब क्योंकि एक नया, अब बिल्कुल ही जो हमने इमेजिन नहीं किया था वो सिचुएशन क्रिएट हो गई, करीब करीब पूरे देश में ही लॉकडाउन की वजह से कोई व्यापार नहीं चले और कोई कलेक्शन नहीं हुई है, तो उस हालात में स्टेट्स को कॉम्पनसेशन कैसे देगी सरकार, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है। तो ये एक टेक्निकल सिचुएशन है। मुझे लगता है किसी ने ये बिल्कुल ही इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कोई स्थिति आ सकती है कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल होगा। और अच्छा, स्टेट्स को भी वो पैसा देखिए जरूरी है, क्योंकि स्टेट्स को अपने खर्चे चलाने हैं और वो पूरी तरह से जीएसटी कलेक्शंस पर डिपेंडेंट है इस रेवेन्यू के लिए। तो एक बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को कुछ हद तक कॉम्पनसेट करना होगा, और वो कैसे करेंगे, क्या अपने रेवेन्यूज में से करेंगे या वो मार्केट बोरोइंग्स करेंगे, ये एक फैसला है जो बाद में ही शायद हम उसका असर जानेंगे। Puneet, what is duty inversion for the benefit of our listeners, and why is the GST Council looking at a correction of duty inversion in footwear, fertilizers and textiles? See, these industries have claimed that the input tax on the raw materials is more than the GST on the output product. So if you're looking at chemicals which go, let's take the example of footwear. So you have certain chemicals, some certain solutions, certain other inputs which are required for making footwear, which may attract GST at a higher rate. However, when you produce these items and which are used by a common man, the government has reduced the GST for the final product. So what happens is that these companies, they have more input tax credit and less liability in terms of GST output. So they actually have a lot of refund claims from government. It creates a lot of burden on the industry because they have put in more taxes, they have paid more taxes, and the requirement was less. So they need refunds from government. This needs to be corrected, because if it is not, then it puts a lot of burden on the manufacturers as well as on the consumers. So I think the government is aware of it. Particularly, we have seen this anomaly in case of textiles, where a lot of inputs have higher tax inputs. So clearly, I think government needs to look at it. Again, this will need to be looked into it in great details, because it's a very, very industry-specific kind of a structure. पुनीत, आपको लगता है कि सितंबर 30 2020 तक जो एक समय दिया गया है अपने जीएसटी रिफंड्स भरने का इन कंपनीज को, सो इनके लिए एक मौका है टू कम क्लीन, एक तरह से कह सकते हैं जैसे इनकम टैक्स में एक एमनेस्टी दी जाती है, उसी तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कोविड की स्थिति के कारण?
देखिए ऐसा सुनो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी जीएसटी जो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स को कंसोलिडेट करके फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। और अदरवाइज जो कंपनीज ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और जीएसटी जिनको एप्लीकेबल है, उनको एक मंथली पेमेंट ऑफ जीएसटी तो करना ही होता है, और उसके बाद उनको क्वार्टरली रिटर्न भी भरनी होती है जो उन्होंने भरी है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये मुझे लगता है एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जिसको ज्यादा उन्होंने उसके लिए, और क्योंकि काफी कंपनीज ने वो कंसल्टेशन नहीं भरा होता है और कुछ समय उसमें लगा होता है या डिले हो जाती है उनकी रिटर्न्स, तो उन लोगों के लिए कुछ राहत है कि बिना पेनल्टी के या कम पेनल्टी, और खासतौर से जो ये राहत दी गई है ये छोटी कंपनी को दी गई है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, ये उनके लिए एक राहत का कदम है। पर मुझे नहीं लगता कि एमनेस्टी स्कीम टाइप की है या उसमें कोई टैक्स को लेकर कोई उन्हें राहत है इस चीज में। Puneet, usually in the GST slab, sin goods have the highest rate of GST, but we have in the story where there would be taking up discussions on taxing pan masala, which is primarily a tobacco product. What is this issue about? So there is obviously a pressure on government to raise taxes from places that they want to, they're consumers, and the government doesn't want to encourage the consumption. So we have seen a lot of taxes being put on petrol and diesel. In fact, if you see petrol and diesel, the government taxes has gone up, excise duty has gone up by 15-16 rupees per litre in the last 2-3 months if we see. So similarly, we had seen a lot of taxes being put on liquor earlier. In the budget, finance minister had put a lot of taxes on cigarettes. So clearly, the so-called sin goods that you mentioned, they have been taxed very heavily by the government. And I think government doesn't find it very productive now to put more taxes on cigarettes and liquor because their consumption started going down. And in that sense, the total collection from these goods, they will start declining. So pan masala, I think, is a kind of a sin good, so to say, which can be taxed a little bit more by the government. So they're going to consider it. I don't think they're looking at a very heavy incidence of taxation on it, but they might raise a little bit of these taxes. This was suggested, in fact, by some of the state finance ministers who wanted to raise tax on pan masala. Well, the objective of any GST Council meeting is to ensure that the tax collections at least remain consistent as compared to the previous calendar year, financial year, with the challenges of COVID-19 and the multiple phases of lockdown to contain transmission. How is the GST Council going to balance the needs of running government expenditure and while at the same time imposing taxes on goods and services? So Arjun, you are right. It's a very unanticipated situation. I mean, I don't think like I said earlier, when GST was introduced in 2017, central government had not only protected the revenues of state governments for the next 5 years, that actually built in a growth of 14% per annum in those taxes, and these were guaranteed by the central government. So, and there was a provision for compensating states for decline or less than the target collection of taxes. So now that situation has arisen when the collection by the GST through GST is much less than the projected numbers for the year. So how does the government or the central government compensate? Central government itself is under a lot of pressure on revenue front, and therefore the discussion that GST Council might consider borrowing from the market to pay the compensation to states in the time being, so that they can carry on their expenses. Now, the borrowings by the GST Council will have to be repaid over a period of time. Whether the central government is going to pay that out of its own coffers, or whether state governments will reduce a little bit of their own collections, I don't know. In fact, that is a decision that GST Council will take. But clearly, this is a very, very unanticipated situation. Government had never foreseen that something of this kind can happen. It has happened now. So they are looking at various options. Borrowings from the market is one of them, and it will be a substantial amount if they actually have to borrow from the market. But I think this collection will be for next. This shortfall will be for next 3-4 months. Maybe post September, we might see return to normalcy as far as GST is concerned. Well, Puneet, do stay with us online as we read the next story
on food grain production. More than 22,800 metric tons of food grains have been distributed to 45.62 lakh beneficiaries in the month of May and June under the Atmanirbhar Bharat package. More than 2,000 metric ton grams have also been distributed by states and union territories to the needy people. Since the lockdown, a total of more than 245 lakh metric tons have been transported. About 117.43 lakh metric tons food grains have been lifted and transported through railway, roads and waterways. A total of 11.68 lakh metric tons food grains have been transported to the northeastern states. Puneet, I hope you're still with us. Yes, sure. Do give us your views on the Atmanirbhar Bharat scheme or the package, especially in the context of record food grain production, briefly. So I think one of the blessings, when I look at stories from around the world in terms of how countries are coping with COVID, one of the challenges for many countries was ability to feed the population. Because many of the countries in the world are not self-sufficient in food production. One of the blessings for India has been that India is now surplus in food grain production. We have had a record production of food grains in last year, and I would say the storages are absolutely brimming to the full. So clearly, India's great blessing has been the fact that its farmers have been able to produce more than what the country consumes. And that's enabled a lot of supply to all those people who can afford to buy it, and enough surplus to be supplied to people who can't afford it, and therefore government is able to provide them free food grains and food items. So India has not had, fortunately, India has not had a crisis on the food front. A lot of successful distribution, very well thought out distribution of food grains, because we do hear a lot of anecdotal evidence from villages where villagers have been able to get free food grains, free food supplies, and very efficiently. So clearly, I think that is one of the great achievements that the government has had in terms of maintaining supply of food to people in villages, in far-flung areas. I think that's been great. That story has been great. So among all the other sectors of economy that we see, whether manufacturing, whether services, it is the rural sector, the farming sector, which has really stood out in this crisis. And in fact, they have provided a lot of relief to the government, to the people of the country. So I think it's a great achievement in that sense. पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी रखेंगे। शेयर बाजारों पर एक नजर डालने के बाद शेयर बाजारों में आज शुरुआत में भारी गिरावट के बाद सुधार आ गया और कारोबार की समाप्ति पर प्रमुख सूचकांक 0.72% की बढ़त पर बंद हुए। बाजार में ये वृद्धि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी मजबूती की अगुवाई में और यूरोपीय बाजारों में फिर तेजी लौटने के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1,190 अंक लुढ़क कर 32,348 के आज के न्यूनतम स्तर तक गिरने के बाद कारोबार की समाप्ति पर कुल 0.72% की बढ़त से 243 अंकों पर 33,781 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंक बढ़कर 9,973 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.96% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.13% के फायदे पर बंद हुआ। Equity benchmarks today rebounded from a sharp sell-off in early trade to finish 0.72% up, led by strong gains in Reliance Industries and a rebound in European markets. After plunging 1,190 points to hit a low of 32,348 in opening trade, the 30-share index Sensex settled 243 points, 0.72% higher at 33,781. Similarly, the NSE Nifty rose 71 points to end at 9,973. In the broader market, at the BSE mid-cap advanced 0.96%, while small-cap appreciated marginally by 0.13%. Mahindra & Mahindra were the top gainer in the Sensex pack, rallying around 7%, followed by Bajaj Finance, Hero MotoCorp, Reliance Industries, Titan and Bajaj Auto. On the other hand, ONGC Tech Mahindra, Power Grid, Infosys and Kotak Bank were among the laggards. According to analysts, market witnessed a gap down opening on negative cues from Wall Street and Asian peers, foreign fund outflows and concerns over rising coronavirus cases. However, recovery in Reliance Industries and strong opening of European stocks
lift domestic investor sentiment. The number of coronavirus cases across the world crossed 75 lakh and the death toll has topped 4.21 lakh. In India, the death toll due to COVID-19 rose to 8,498 and the number of infections rose to 2.97 lakh according to the Health Ministry. Puneet, I hope you're still with us. Sure, Rajan. Puneet, what were the reasons for the volatility that we saw in the market today? It went down by almost 1,200 points before settling at 243 points above yesterday's closing. So, Arjun, today's market action really is a surprise because we all thought that the markets will really tumble today in light of what happened on Wall Street yesterday. Because Wall Street went down by almost 2,000 points, almost 6% it fell. And clearly there was panic in the international markets in the morning when Asia was opening. And there were we saw reports coming in about such a sharp sell-off. But I think two things happened. One, of course, that the U.S. markets, after falling, in the futures, we saw the markets rebounded in USA. So clearly, yesterday's sell-off appeared to be a one-off sell-off and not a start of a new bear phase. So markets, I think, took a lot of reassurance from the fact that the U.S., which had been rising very sharply, in fact, NASDAQ had reached all-time highs, and then the Dow Jones also was near its all-time peak, just about 7-8% away from the all-time peak. So clearly, U.S. markets had risen a lot. So it's appeared that this was a technical correction rather than a sell-off by long-term investors. I think Asian markets took heart from it. There was a rebound in Asian markets. There was a rebound in futures, U.S. futures. So markets took off in India also. After falling initially, then we started seeing some long-term buying. I think more than that, Indian economy appears, that is a message from the markets. I don't have data which supports this theory, but the market seems to suggest that the Indian companies are returning to manufacturing, to their businesses much faster than we had anticipated. And therefore, I think the data for June, the industrial production data or the revenue data for June may be better than expected. That appears to be the message from the market so far. And in fact, the rally in the market was pretty broad-based. So a lot of small companies, they were doing in the stock markets. And I think that is a good message for investors. There might be more stability, although the volatility continues to be high. If you look at the VIX, which is still 31, 32, which is much higher than what the normal levels are. But I think markets are kind of beginning to stabilize around the current level. पुनीत, इंटरेस्टिंगली आज ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर रहा, करीब 2.9%, जबकि मई के जो रिटेल सेल्स की फिगर्स आई हैं उनके अकॉर्डिंगली 87% फॉल हुआ सेल्स में. सो आपको लगता है कि बाजार एक बहुत रैशनल आउटलुक ले रहा है इस लॉकडाउन के प्रति, और मे बी दे आर रियलाइजिंग कि वो पीरियड अब खत्म है और जो अनलॉक पीरियड है उसमें पिकअप, जैसा आप अभी कह रहे थे कि फास्ट होने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल. अगर यदि आज एग्जांपल मैं आपको देता हूं, महिंद्रा के आज रिजल्ट्स आए. एक बड़ी रिस्पेक्टेड ऑटोमोबाइल कंपनी है और उन्होंने 3,300 करोड़ रुपए का लॉस क्वार्टर के लिए डिक्लेयर किया. तो जो बहुत ही अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा नहीं था कि महिंद्रा में इतना बड़ा लॉस हो सकता है. हालांकि ये लॉस जो है वो एक वन टाइम राइट ऑफ की वजह से हुआ है, पर फिर भी एक चौंकाने वाला फिगर है एक बड़ी ऑटो कंपनी के लॉस के लिए. और ये इन्होंने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में उन्होंने डिक्लेयर किया आज. उसके बावजूद जो शेयर्स था उनके, वो करीब 8 से 9% उसमें हमने बढ़त देखी. तो क्लियरली मार्केट्स जो है वो बैड न्यूज को ऑलरेडी मार्केट से मानती है कि हमने प्राइसिंग कर चुके हैं और अब आने वाले समय में थोड़ा सा बेहतर होगा प्रदर्शन, और उसको लेकर के मार्केट जो है वो चल रही है. मैं भी ये मानता हूं कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जो करंट ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर 2020, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट हाफ है, वो मार्केट्स राइट ऑफ कर चुकी है. वो मान चुके हैं कि ये इसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड हाफ होगा उसमें वो प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सकता है. और मार्केट्स अब सेकंड हाफ ऑफ 2020 एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उस पर फोकस कर रही है. और पुनीत, जो अब सरकार की मेजर मुहिम थी डिजिटाइजेशन, मेक इन इंडिया, आपको लगता है कि शायद एक ये कोलैटरल कह सकते हैं सिल्वर लाइनिंग है कोविड में, कि उनको बहुत बड़ा पुश मिला है इस नई संकटग्रस्त सिचुएशन से? बिल्कुल. पेमेंट्स का डेटा भी आया है
वो तो थोड़ा सा मायूस करने वाला है, क्योंकि काफी डिजिटल पेमेंट्स में कमी आई, और वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बिजनेसेस जब बंद थे तो मुश्किल है कि डिजिटल पेमेंट्स होती। पर मुझे कि जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर, इनफैक्ट जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था महिंद्रा का, तो उन्होंने ये कहा है, हालांकि वो ट्रैक्टर्स बेचते हैं और वो गाड़ियां बेचते हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सेल्स है, इंक्वायरीज है, वो ज्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि पूरा जो बिजनेस करने का तरीका है वो काफी चेंज होने वाला है। उसमें डिजिटल पेमेंट्स का ज्यादा रोल होगा, उसमें डिजिटल सेलिंग या ऑनलाइन सेलिंग का ज्यादा रोल होगा। डेफिनेटली दिस ट्रेंड्स आर गोइंग टू चेंज वेरी सिग्निफिकेंटली। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। कोरोना वायरस संक्रमणों के फिर बढ़ जाने से लॉकडाउन से पहुंची क्षति में सुधार की गति प्रभावित होने की चिंता बढ़ने से एशियाई बाजारों में मंदी आज चौथे दिन भी जारी रही और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.7% की गिरावट पर बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2% की भारी गिरावट आई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% के नुकसान पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स दोनों में 1% की वृद्धि दर्ज हुई। फ्रांस के कैक में 1.9% का उछाल दर्ज हुआ। In the US market, the Dow Jones plunged 6.9%, the S&P 500 tumbled 5.9%, and the Nasdaq Composite declined 5.3%. Puneet, just looking at what's happening in the US market, you spoke about the sharp fall of 7% earlier, and that had an impact on volatility in the Asian markets. And the IT index, if you look at the domestic market right now, it fell by 1.4% because of comments by US President that they will seek to cancel H-1B visas to import software personnel into the country. How important is this announcement? I think it's a very important announcement because H-1B has been the pillar on which India's IT sector outsourcing has really been built up. However, I think if you look at comments from TCS chairman and many other IT companies, they say that the way that they have worked, the work from home culture, I think that is also going to get built into the culture of IT outsourcing companies, while H-1B continues to be a matter of concern because companies need to send workers to the sites of their clients. But I think the number of visas required will also decline because of COVID crisis. And I think that in the next 2 to 3 years, the way IT companies work, I think that is going to change dramatically across the world. अमरीकी फेडरल रिजर्व की इस सप्ताह मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रोड टू रिकवरी है, जिसके चलते हमने ये इतना गिरावट भी देखी बाजारों में। संक्षिप्त में बताएंगे कि फिच और मूडीज ने जो कहा है कि FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 8-9% तक पहुंच सकती है। ये आपको उत्साहजनक लगता है भारत के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में? देखिए सोनू, यदि हम उन फिगर्स को स्टैंड अलोन देखते हैं तो जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सच बात तो यह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्शन में ये माना है कि भारत में इस साल काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी जीडीपी में, तो वो काफी हमें नेगेटिव इंपैक्ट करेगी और लो बेस के ऊपर ये ग्रोथ आएगा। पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म हम ग्रोथ ट्रेंड देखें भारत का, तो वो 5 से 6% जो जीडीपी ग्रोथ है वो हम मेंटेन कर पाएंगे। तो यदि मैं 5 वर्ष का या 7 वर्ष का या 10 वर्ष का ट्रेंड देखता हूँ, आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे एट दिस 6% एंड होपफुली पोटेंशियली गो टू 7-8%. आई थिंक दैट इज मेंटेन्ड. आई थिंक दैट इज द ब्रॉडर मैसेज इन द स्टोरी. चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 75 रुपए 84 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। And moving on to the oil market and intraday trade, Brent crude prices were trading at $38.80 per barrel, while WTI crude prices were at $36.50 per barrel. उधर सकारात्मक वैश्विक संकेतों और रुपए में गिरावट के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 153 रुपए बढ़कर 48,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा, लेकिन चांदी 665 रुपए सस्ती होकर 49,235 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,734 प्रति आउंस पर था, हालांकि चांदी $17.62 प्रति आउंस के करीब स्थिर बनी हुई थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो आपसे एक छोटी सी टिप्पणी बस तेल पर चाहेंगे। आपको लगता है कि तेल में ये रेंज बना रहेगा 40 के करीब?
बिल्कुल। देखिए सोनू, ये हमें मालूम था कि जब शॉर्ट स्क्वीज के बाद तेल काफी बढ़ा था और करीब डबल हो गए थे उसके रेट, अब वहां पर वो करेक्शन होकर के एक नॉर्मल रेट जो मुझे लगता है $30 और $35 के बीच में वहां पर स्टेबलाइज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says no late fees for nil GST return filing between July 2017 and January 2020. Equity benchmarks gain 0.7% led by rebound in European markets. Sensex closes 33,781 points and Nifty rises to 9,973. And oil prices extend losses amid fear of second wave of COVID-19 outbreak. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.